Today our next topic is the perimeter and area of the circle. Perimeter ਤੇ area ਸਰਕਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਰਕਲ ਕਿਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਰਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। The fixed point is called the center of the circle and the distance between the moving point and the fixed point is called the radius of the circle. So circle is the locus of a point which moves such that the distance of the moving point from a fixed point is always constant. Here a circle is the locus of a point which moves such that the distance of the moving point from a fixed point is always constant. क्या मतलब हुआ इसका कि जो दूरी है, ये मूविंग पॉइंट है मान लो हमारा, और ये ऊपर है फिक्स्ड पॉइंट। सो ये मूविंग पॉइंट की दूरी जो है वो फिक्स्ड पॉइंट से जहाँ पॉइंट ओ से सेम रहती है हमेशा। सो दैट ओ पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल and the distance between the moving point and the fixed point, this is the fixed point and this one over we can say over moving point. The distance between the fixed point and the moving point is called the radius, that is denoted by r, that is radius of the circle. So radius को पंजाबी ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ radius ਨੂੰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘੇਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਔਰ ਘੇਰਾ, ਤੇ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੇਤਰਫਲ। ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੇਤਰਫਲ ਆਫ ਏ ਸਰਕਲ। ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਕਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਏਰੀਆ ਆਫ ਏ ਸਰਕਲ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ, ਚੱਕਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲੀਏ ਚੱਕਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, the fixed point is called the center of the circle। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਲ, center of the circle। and the distance between the moving point and the fixed point is called the radius of the circle, that is r। fixed point ਤੇ moving point ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੇਡੀਅਸ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮਾਲ r ਦੇ ਨਾਲ। ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਬਾਉਂਡਰੀ। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਫ ਅ ਸਰਕਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ। ਸੋ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆਫ ਸਰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਬਾਉਂਡਰੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਡਿਨੋਟਡ ਬਾਈ ਸੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆਫ ਏ ਸਰਕਲ C is equal to 2 pi r। तो ये आप फार्मूला आप याद रखना, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 pi r। नेक्स्ट है अपना एरिया। एरिया ऑफ ए सर्कल A, एरिया ऑफ ए सर्कल A इज इक्वल टू pi r स्क्वायर। तो दो फार्मूले ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ याद रखने हैं। सब तो पहला की है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल C is equal to 2 pi r एंड दूसरा है एरिया ऑफ द सर्कल A is equal to pi r स्क्वायर। सो हम आप इसके रिलेटेड ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮ ਕਰਦੇ ਆ वन बाय वन। सो टेक द एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.5। पहले सम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
भी ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ घेरा ते एरिया मतलब खेत्रफल कड्डो चक्कर का जेकर रेडियस अर्ध व्यास कितना दिता हो 3.7। सब तो पहला की आप करेंगे इदा एक सर्कल ड्रा करो वो आर की वैल्यू हैगी अपने को कितनी सो आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। सो यार आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। इन्ना दे दो फिगर नंबर 1। So we start like this. Radius of the circle, radius of circle small r is equal to 3.5 centimeter. इसे आप लिख सकते हैं as shown in figure 1. So radius of the circle r is equal to 3.5 centimeter as shown in figure 1. So circumference of circle पहले का फार्मूला लिखो circumference of the circle का फार्मूला 2 pi r. So put the values pi की वैल्यू जनरली आप पाई बटा 7 ले दी है तो r है अपने को 3.5. आफ्टर सिंपलीफाई वी गेट पॉइंट चक्कर थले 10 ला 7 5 5 2 2 2 कैंसल so we get 22 centimeter. Next आप आगे ये फाइंड आउट करना एरिया. Now area of circle इधर की फार्मूला है पाई आर स्क्वायर. So put the value of pi, that is pi बटा 7. R is 3.5 the square. We get by 22 over 7 multiply 35 over 10 multiply 35 over 10. पॉइंट चेक करो पता चले 10 लाख. सो कटिंग करके किया गया अपने को 5 2 11. तो इन्हें कट दो 5 थे 7 5 थे 2. इस तो बाद को अपन होल कटिंग नहीं कर सकते. सो जो बचे उन्होंने आपस में मल्टीप्लाई कर दो. इतने की वजह अपने को 11 इतने वजह 7. सो 11 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 77. डिनोमिनेटर में देखो की बचा डिनोमिनेटर में ओनली 2 77 ओवर 2. तो इन्हों के ऊपर डिवाइड करके लिख सकते हैं. डिवाइड कर दो 77 2 ना 3 दे गया 6 17 8 से चला गया 16 1 पॉइंट लग गया 0 5. So we get 38.5. So area of the circle we get 38.5 centimeter square. So therefore C is equal to 22 centimeter and area of the circle A is equal to 38.5 centimeter square answer. So की करना पाएगा देखो की क्वेश्चन है अपना फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.5. रेडियस अपन गिवन सी 3.5. फाइंड आउट करने लिए अपन क्या सी सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल. सब तो पहला अपन की करांगे जो अब चीज अपन गिवन है वो लिखनी है. गिवन किया रेडियस ऑफ ए सर्कल हमको दिया हुआ. सो रेडियस ऑफ ए सर्कल r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर. नेक्स्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फार्मूला अप्लाई करो दैट इज 2 पाई r. इन्हां दी वैल्यूज पुट करो. वैल्यूज पुट करके अपने को आ गया 22 सेंटीमीटर. सिंपलीफाई करने तो बाद उस तो बाद एरिया ऑफ द सर्कल. एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला पाई r स्क्वायर दैट इज 22 over 7 मल्टीप्लाई 3.5 स्क्वायर. पॉइंट चक्कर थले 10 लग गया. आफ्टर सिंपलीफिकेशन वी गेट 77 over 2. इन्हों पर डिवाइड करके कितना गया 38.5. सो एरिया ऑफ द सर्कल अपने को आ गया 38.5. एंड में देखो दोनों जो भी अपन क्वेश्चन पूछा उसका आंसर लिखना जरूरी है. सो देयरफॉर C इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर एंड A इज इक्वल टू 38.5 सेंटीमीटर आंसर.
So now we take sum number 2. The circumference of a circle is 66 centimeter. Find its area. So इस sum ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ circumference ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. Circumference of a circle is given 66 centimeter. Find its area. So area ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ. ਦੇਖੋ area ਆਪਾਂ find out ਕਰਨਾ, circumference ਆਪਾਂ ਨੂੰ given ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ ਕੀ find out ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ given ਹੈ. So circumference of a circle, that is C is equal to 66 centimeter. Bracket ले दो given. So find out की करना अपन area of circle A अपन जिहड़ा है वो find out करना है. So area of circle का देखो फार्मूला की होता है A is equal to pi r square. तो एरिया ऑफ सर्कल का देखो फार्मूला की है पाई आर स्क्वायर. सो पाई की वैल्यू तो अपन पता स्टैंडर्ड y बटा 7 लेनी है. सो जेकर अपने को r की वैल्यू होवे तो आप एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इसलिए अपन सब तो पहला की फाइंड आउट करना पड़ेगा r फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो नाउ circumference of the circle C is equal to 2 pi r. Now we know that C is equal to 2 pi r. So इथे पुट करो वैल्यू जेडी अपन पता है. C दी कितनी है 66 is equal to 2 multiply 22 over 7 multiply r. So after simplification we get 66 multiply 7 is equal to 44 multiply r, or r is equal to 66 multiply 7 over 44. So in simplify कर दो 11 the table से 6, 11 the table से 4, again 2 the table से कट हो गया है 3, 2 the table से कट हो गया 2. So कितना आ गया अपने को 21 over 2, 21 over 2. So in divide कर दो, that is 10.5 सेंटीमीटर. r की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 10.5 सेंटीमीटर. हम देखो r आ गई. हम आप एरिया ऑफ सर्कल जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. इतने फाइंड आउट कर दो. देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल A is equal to पाई r स्क्वायर. पुट कर दो वैल्यू पाई दी है कि y बटा 7, r आपा कितने की. सो इथे वैल्यू पुट कर दो पाई दी y बटा 7, r दी कितनी फाइंड आउट की है 10.5 दा स्क्वायर. सो ये आ गया y बटा 7 मल्टीप्लाई 105 over 10 मल्टीप्लाई 105 over 10. After simplify we get 15. 2 the table थे 5, 5 the table थे 3. इन भी काट दो 5 the table थे 21, 5 the table थे 2. After simplification अपने को कितना आ गया. So 11 multiply 3 that is 33 multiply 21 over 2 and multiply करो 33 नु 21 नाल we get 693 over 2, 693 आ गया अपने को मल्टीप्लाई करके 693 over 2. सो जेकर अपन डिवाइड करके देखिए तो एरिया ऑफ द सर्कल ए अपने को आ जाता 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थ है. सो इतने आप करना सी एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना सी. एरिया ऑफ सर्कल आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एक फिर जरा देखो सवाल की सी सवाल भाई द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 66 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स एरिया. सर्कमफ्रेंस सर्कल का दसिया सीगा 66 ਤੇ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ 66.
नाउ एरिया ऑफ द सर्कल ए ਆਪਾਂ फाइंड आउट करना, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ ਫਾइंड आउट ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ r ਕੱਢਾਂਗੇ। r ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਨਾਓ ਦੈਟ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ c is equal to 2 pi r. Put the values. After simplification we get r is equal to 10.5 centimeter. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ ਫਾइंड आउट ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ ਫਾइंड आउट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ y/7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10.5 ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਆਫਟਰ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗੈਟ 693/2 और after dividing we get 346.5 centimeter square. So like this you can do other sum. Our next topic is, if the perimeter and area of a circle are numerically equal, then find the radius of the circle. जेकर perimeter ਤੇ area of a circle दोनों ही बराबर हों तो ਆਪਾਂ ਕੀ find out करना? radius of the circle find out करना है। तो सब तो पहला ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? फार्मूला perimeter of the circle ਦਾ। so solution perimeter of circle, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ? that is 2 pi r. perimeter means circumference, perimeter ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? circumference of circle, that is 2 pi r. and area of circle, that is pi r square. so ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖ ਲੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, then now by according to statement, टू पाई r is equal to pi r square. ब्रैकेट में आप लिख दें c is equal to a. so after simplification pi na pi कटी गई, we get 2r is equal to r square. so or r is equal to 2. r अपने को कितना आ गई? 2, क्योंकि एक r इधर एक r उधर, दोनों पासों r भी कैंसिल हो जाएगी। सो जेकर पैरीमीटर एरिया दोनों ही आपस में बराबर हों, पैरीमीटर ते एरिया बराबर हुए तो अपने को रेडियस की कितनी वैल्यू आ जाती है? देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल r is equal to 2 equal to 2. Next sum is, if the perimeter of the semicircle protector is 36 centimeter, find the diameter. तो की सम है? जेकर सैमी सर्कल प्रोटेक्टर जिन्होंने ਆਪਾਂ डी कह ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਜੇਕਰ ਪੈਰੀਮੀਟਰ of a semicircle protector is 36 centimeter ਹੋਵੇ ਤਾਂ find its diameter. ਸੋ diameter ਆਪਾਂ find out ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ diameter ਕੱਢਣਾ। diameter ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। diameter of the circle ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 2 multiply radius, 2 multiply r. ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ diameter of the circle ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सब तो पहला जो अपन गिवन है उसको शुरू करते हैं। गिवन की है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सो सॉल्यूशन पहला जूम कर लो, लेट रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कल, let radius of a semicircle is small r. Here we have drawn the figure, that is the radius r and this is a semicircle. अर्ध चक्कर जिन्होंने पंजाबी च आपां कह दिंदे आ अद्धा चक्कर, अर्ध चक्कर सेमी सर्कल। सो सब तो पहले इसका फार्मूला लिखो, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, that is equal to pi r plus 2r.
ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਈ ਆਰ ਪਲੱਸ 2r। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਵੀ ਦਿਆ, ਗਿਵਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਸੋ देयरफॉर पाई r plus 2r is equal to 36 because अपने को पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस सी दिया 36 सेंटीमीटर, that is given। So now pi r plus 2r is equal to 36। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ r ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So by taking r as a common we get pi plus 2 is equal to 36। So now put the value of pi here, r into pi की वैल्यू कितनी है, पाई बटा 7 plus 2 is equal to 36। So r by taking LCM we get 22 plus 14 is equal to 36। r into m plus करके आ गया अपने को 36 over 7 is equal to 36 और 36 r is equal to 7 multiply 36 और r is equal to 36 multiply 7 over 36। 36 में 36 कैंसिल हो गया, r is equal to 7। So now therefore r is equal to 7 सेंटीमीटर। रेडियस अपने को आ गया 7 सेंटीमीटर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ इजीली डायमीटर ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सो ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ डायमीटर ऑफ प्रोटेक्टर। किहदा डायमीटर ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, प्रोटेक्टर ਦਾ। सो डायमीटर ऑफ प्रोटेक्टर that is small d ना अपन नोट करेगा 2 multiply r। So we get 2 multiply 7 that is 14 centimeter। So diameter of the protector अपने को कितनी वैल्यू आ गई, 14 centimeter आंसर। So like this you can do other sum। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। I hope you understand today topic that was related to the perimeter and area of the circle। So please subscribe my channel and like the video। If you have any problem you can comment me। Thank you।